Om Shri Ganeshaya Namo Namah. Greetings to everyone, world over, all our brothers and sisters across the globe, wherever you are. We extend you a very warm welcome. It's a wonderful green morning in Canada, USA, Latin America, and it's a post lunch green afternoon all the way in the European continent, entire Europe, European Union, and a couple of other nearby places. And as far as India is concerned, neighboring countries, that's Southeast Asia, that's ASEAN, and of course, I go to Central Asia, I go to Middle East and all that, and wishing you all a wonderful, happy evening. I go across to Mauritius also, Seychelles also, Africa also. We extend a very warm welcome to everybody world over. Thank you very much for being a part of it. Ladies and gentlemen, post-pandemic particularly, one of the most important subject which teachers should focus, youth should focus, parents should focus, neighbors should focus, the community, they should focus. The most important thing is mental wellness of everybody. उसकी कोई उम्र नहीं है, उसका कोई लेन देन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्किल सेंटर किसी के साथ नहीं है. Mental wellness is needed for everybody along with physical wellness. Physical wellness में आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, जिम में जाते हैं, डाइट ठीक से लेते हैं, फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, सब कुछ है. बट वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड इज योर मेंटल वेलनेस. आप सोचते कैसे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, what all thoughts are going on, when you sleep, what is going on, when you get up, what is going on, in school, what's going on, in college, what's going on, with friends, what is going on, with parents, what's going on, teachers, what do they think about you. There are a number of things which you have to take into consideration when you talk about mental wellness. अब इसमें challenges क्या हैं, और यूथ को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि यूथ आज भी है और कल भी है. एक मूवी आई थी बड़ी अच्छी राज कपूर की, कल, आज और कल. कल यानी कि जो गुजर गया, आज यानी कि जो है, और कल जो आएगा. When you talk about it, when you look at it, ladies and gentlemen, the youth play a very important role for us. और हमें ये भी पता है कि during the pandemic, teachers have also burnt out. They have worked very hard. They have tried their level best, like doctors, nurses, paramedical people. They tried their level best. Similar way, doctors, you're great warriors. That means teachers, you are also specialists of your own area. You try to provide education in a way जहां पर फिजिकल वेलनेस के साथ साथ बच्चों की मेंटल वेलनेस भी अच्छी हो, पॉजिटिव हो, बच्चे नेगेटिव ना सोचें. आज के समाज में बहुत कुछ चल रहा है. There are lots of things which are going on. Sometimes we don't notice. But if you don't notice, the consequences can be very severe, very bad, and very drastic. You've got to take into consideration बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे कैसा महसूस करते हैं, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगता है. All those things have to be taken into consideration. So welcome to the ICSI, International Chamber for Service Industry, today's special webinar, which is on mental wellness of youth. We would like to share with all of you, when we are talking about mentalness, International Chamber for Service Industry is extending a very warm welcome to all of you. Youth and mental health post-pandemic, post-COVID-19. अगर आप इस सब चीज को देखें, लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत चैलेंजेस हुए, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, कॉलेज नहीं जा सके, यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, बच्चे पेरेंट्स के साथ घर में ही रहे. बच्चों की शायद प्लेसमेंट होनी थी, इंटर्नशिप होनी थी, कहीं जाना था बच्चों ने. They could not go anywhere, and there were lots of challenges which we all felt during the pandemic and the post-pandemic. Once again, you have to address the emerging youth mental health crisis. It is something very important. जैसे हम बात करते हैं ना, repackage education, rethink education, reboot education. Have you thought of जो youth हैं, जिनको बहुत सारे challenges pandemic के time में मिले,
How are they feeling? Which way the things are going on? What all is there? And what storm they have passed through? What exactly is passing through their mind? अरे अल्टीमेटली पूरे संसार में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, दैट्स फॉर द यूथ. उन्हें जॉब भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, मे बी विद इन होम, मे बी आउटसाइड. They want to be startup also, they want to be millionaire also, they want to participate in various contests also. At the same time, they want to excel in life whatever we do. Now there are three factors which are killing our youth and killing the humanity in a very aggressive way: stress, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. बहुत बार लोग कहते हैं कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है, कई बार स्ट्रेस आ भी जाता है. और स्ट्रेस किस तरीके से आता है, पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं. क्या स्ट्रेस के बाद एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी का क्या लेवल होता है, और डिप्रेशन क्या है, और डिप्रेशन हमें कैसे महसूस होता है, किस तरीके से हमें पता लगता है. जब हम स्ट्रेस की बातचीत करते हैं, हो सकता है आपके मम्मी पापा ने कोरोना के टाइम में कुछ लोन लिया हो, बैंक को वापस करना है, आपने अपने किसी फ्रेंड से कोई पैसे लिए हों जो आपको वापस देने हैं. एट द सेम टाइम आपके करियर की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है. उसके अलावा आपकी नेचर है कि आप कोरोना के टाइम के बाद, कोविड के बाद आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप चीज्ड अप हो जाते हैं, और आप बहुत सारे कंफ्यूज्ड रहते हैं, आपको ओवरलोडेड लगता है, आपको सब कुछ फ्रस्ट्रेटेड लगता है. व्हाई डज दैट हैपन? दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं, आपको लगता है हर चीज के अगेंस्ट स्ट्रगल है, आपको लगता है कि डाइट के लिए, फूड के लिए भी स्ट्रगल है, आप जो वर्क प्लेस है वहां पर भी आपको अच्छा नहीं है, आपको हर जगह एक प्रेशर सा महसूस होता है. और अगर आप वर्क प्लेस पर हैं और कुछ डेडलाइंस को मीट करना है, सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट स्ट्रेस. डिवोर्स. During the pandemic, the divorce cases have increased. It has become a very big challenge because when the parents were at home, children were at home, and at the same time, you were overloaded, you were confused, you felt damaged, you felt failure, you felt on all fronts that you're overloaded and you're totally confused what to do, what not to do, how to go by, what exactly is to be done. Complete stress which you have got of different kind. अब थोड़ा एंजाइटी की तरफ को चलते हैं. हमें सिम्टम्स कैसे मिलते हैं? कुछ जनरलाइज्ड एंजाइटी के डिसऑर्डर होते होंगे, कुछ सिम्टम्स होते होंगे. चलिए, एक तो रेस्टलेसनेस, फटीग्ड, आपको लगता है आप थके थके हैं, फटीग्ड है. एक्सेसिव एंजाइटी जो होती है, जो वरी से भी आती है, आपके मसल्स में लगता है जान ही नहीं है, आपको दर्द सा महसूस होता है जोड़ों में, बाकी जगहों में एकिंग होती है, सोरनेस होती है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, इरिटेट होते हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको स्लीप प्रॉपर नहीं होती. सो मेनी चैलेंजेस यू पास थ्रू. मे बी दे कुड बी द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी which we have to take into discussion and we have to take into consideration. Okay. अब हमने स्ट्रेस की बात की, एंजाइटी की बातचीत की. व्हाट कुड बी बेसिकली डिप्रेशन? जब हम डिप्रेशन की बातचीत करते हैं तो एक तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है ना, उसको भी आप लेकर चलिए. आपको कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, कभी आपको क्रॉनिक पेन सी होती रहती हैं कई जगह पर जोड़ों में, और इन्फ्लेमेशन सा बॉडी में होता रहता है, और फिर आपको कुछ इंसोम्निया होता है, नींद ठीक से नहीं आती है, हेडेक सा रहता है, फटीग्ड होते हैं, और उससे कुछ कभी कभी हार्ट में भी ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा अजीब सा हो रहा है. आपको वेट लॉस भी हो सकता है, नौशिया भी हो सकता है, आप वेट गेन भी कर सकते हैं, वेट लूज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. सो बेसिकली जब हम सिम्टम्स की बातचीत करते हैं डिप्रेशन की, so they will vary slightly, depending on what kind of a person you are. It would also range from mild to severe. In general, जो symptoms होते हैं तो वो basically low energy के, feeling very sad और hopeless, आपकी जो thoughts हैं वो self harming, suicidal type होंगी,
आप इरिटेट तो होंगे ही होंगे, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, आपकी जो हॉबीज हैं उनमें आपको कुछ मजा नहीं आएगा, आप कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहेंगे, आपका स्लीप पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, आपका ईटिंग बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ तो आप ज्यादा खाएंगे या बहुत कम खाएंगे, आप खाएंगे तो आपको आपको पता ही लगेगा मैं कितना खा रहा हूं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन ईटिंग बिहेवियर ऑल्सो। फिर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको जो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, दे ऑल लीड टुवर्ड्स where we say the person is under depression. ओके, जो बच्चे टीन्स में एंटर करते हैं 13 के बाद, और उसके बाद आगे हम लेकर चलते हैं 13, 14, 15 एंड देन यू मूव अहेड, then at the same time physical, mental and social, all these areas we have to take into consideration. और अगर हम देखें तो एक बड़ा ही अलार्मिंग फैक्टर है which has come into consideration, that 14 और 29 ईयर की एज के बीच में बच्चों की एक सुसाइडल टेंडेंसी भी बनती है, and that is the cause of the death in the young people which is taking place. I do not want to name the state which has got very less population. You cannot even think of, you can't imagine. But when you say the density and you see the concentration of suicidal, you'll say, oh my God, I can't believe that. Okay, stress, anxiety, depression, suicidal tendency and all that. अब how to build a better mental health? अब इसको अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने आप को काम कैसे रखूं, बिकॉज you have to keep yourself positive physically as well as mentally, because both the things are very important. And at the same time, you got to know what is your problem, what is the cause. You need to know that. What is the cause of your mental health? You can talk with your family members, you can talk to your friend, you can talk to someone who knows more about mental health and who will understand you better. That is something very, very important. Ask for help. Silent मत होइए, गुम मत हो जाइए, गुमनाम मत हो जाइए, बिल्कुल आइसोलेशन में मत जाइए. Try and be with others, connect with others, because when you will remain connected, connect with nature, connect with people, connect with your daily routine, connect with your various activities, that is something very important. Now, what could be the factors that can change or that can shape the mental health of the young people? हम इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, एनवायरमेंट, सोसाइटी, इन सब चीज की बातचीत करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे आपकी एज, आपके जेनेटिक्स, आपका रेस, आपकी एथनिसिटी, आपका जेंडर, आपका डिसेबिलिटी, आपकी बिलीफ, आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, आपका कोपिंग with the skills and all, you have to take into consideration. When you talk about family, your relationship with parents, your relationship with caregivers, your relation with siblings, your relation with other family members, maybe immediate family or maybe a distant family. At the same time, financial stability. आजकल आप इंडियन आइडल कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, अगर आप टीवी के ऊपर रात को प्रोग्राम देखते हो तो 8, 8:30, 9 बजे, because my family, they watch television, but I don't have time, I don't go there. But sometime in between, after finishing this webinar, I go for 3-4 minutes, and that time I see some of the children dancing. Yesterday, there was a girl from Uttarakhand, I don't know whether she got selected or not, but she gave her lifetime story. And she told over there, her father was drunkard, how he died, 3 sisters, she was the eldest, and how there was a struggle in the family. Their mother was also shown on the screen. And when I watched that particular program, it was a big trauma. And that is the time I understood. So there could be a financial instability also. And during the coronavirus period, when people were at home, the things have come to notice, the statistics have come, there was an increase in the domestic violence, which gave a lot of trauma to the youngster. And that may take some time for them to come out of that. Anyway, when you think about community, once again, you got to see in your community
your relationship with your peers, your teachers, your mentors, your coach, your other people, and your faith in community. आपके स्कूल का क्लाइमेट, कॉलेज का क्लाइमेट, how the environment is, how the people are dealing with you, treating you, and greeting you, and how do you feel about it? That is something very important. Academic pressure और उसमें कम्युनिटी की सपोर्ट क्या है? अगर हम एनवायरनमेंट की बातचीत करते हैं, सो नेबरहुड में आपके यहाँ सेफ्टी कैसे है? आपके आसपास की एनवायरनमेंट कैसी है? क्या आप एक सेफ माहौल में हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ वहां ठीक है पोस्ट पैंडेमिक? That is something very important which we all have to realize. And then, what is your access to the green spaces? क्या आपके आसपास ग्रीनरी है? पशु पक्षी जानवर पौधे और प्लांट्स फ्लावर्स, ये सब चीज भी आपके मूड को, आपकी चीजों को शिफ्ट करते हैं. And you start thinking positive when you live with nature, think about nature. So environment is very important. That's why they always say there should be a positive environment near you. क्या आप हेल्दी फूड ले रहे हैं कि जंक फूड ले रहे हैं? क्या आप अपनी हेल्थ का केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके सिटी में पोल्यूशन का लेवल क्या है? आपके आसपास नेचुरल डिजास्टर्स कैसे हैं? और जो क्लाइमेट चेंज है, दैट इज अ कंसर्न ऑफ एवरीबॉडी व्हेन वी टॉक अबाउट इट. That is something very important. All the dignitaries, those have joined on the YouTube and those are posting their views. I'll share your names in a little while. Keep posting. I'll talk about you in a little while. Then comes society. Social and economic inequalities. कोई कहीं पैदा होता है, कोई किसी फैमिली में, कोई किसी जगह, किसी का माहौल कोई और होता है. But at the same time, there should not be a discrimination. There should not be a racism. And at the same time, what is the influence of the media on you? What is the influence of the technology on you? And what kind of a culture is prevailing? What kind of a government policies are prevailing? Are they really helping you to grow, or are they playing with your sentiments? All that is very important. Thereby, mental health is very important in education ecosystem. Okay. Now, what could be the tips for good mental health? Eat healthy. Please don't take junk food. घर का बनाया हुआ खाना खाइए. और दूसरी बात, आपको याद होगा कि आयुर्वेदा में क्या कहते हैं? कोई भी आइटम जो 3 घंटे से पुरानी है, 3 घंटे से पहले बनी है, उसे मत खाइए, वो शरीर के लिए अच्छी नहीं है. कुकर में अपना खाना मत बनाइए, उसको नेचुरल वे में हीट अप होने दीजिए, बनने दीजिए. एक दाल जो कुकर में बनती है और एक दाल जो कढ़ाई में बनती है, क्योंकि आप उसके सारे न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म कर देते हो जब आप कुकर में 3 सीटियां देते हो और आप बड़े खुश होते हो, मैंने 10 मिनट में दाल बना ली. That is not good. And nowadays youngsters are taking a lot of junk food. You may not realize now, but after a few years you will come to know, as the age would be advancing, you will have lots of challenges with your body, physical health and mental health. Be active. This is something very, very important. Every day do something. Right from the time you get up in the morning until you go to sleep, active रहिए, active रहिए, active सोचिए, energetic रहिए. Enjoy walks. Go with your friends, go with your family, go with your neighbors, whatever you enjoy, but this is something very important. Now, ये तो मेरे लिए भी कंसर्न है. हमेशा हम कहते हैं, क्योंकि मैं कभी भी 8 घंटे नहीं सोया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 7 से 8 घंटे आपको जरूर सोना चाहिए. और दूसरी बात, लुक फॉर प्रोफेशनल हेल्प इफ यू नीड. एंड एट द सेम टाइम टॉक अबाउट योर फीलिंग्स with your friends, with someone else to whom you trust. This is something very important. Unless you don't open up, जब तक आप अपने दिल की बात किसी से कहेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम आती रहेगी. Taking charge of your mental health. Find the right specialist. And don't forget, surround yourself with family and friends. Isolation में मत रहिए. Talk to counselors, social worker, and other trusted adults to whom you feel that they are one. Continue doing whatever you love, reading, writing, singing, dancing, music, sports, nature walk, creating art. जो भी आपको करना अच्छा लगता है,
कभी भी अनऑक्युपाइड मत रहिए। ये देखिए, ये मेंटल स्टेट है। इसको देखने के बाद ही you're mad, you're sad, you've got fear, you feel lonely, you have anxiety, you have stress, you have depression, you have grief, you have worthlessness. You always feel that you are not loved by anybody. You have got various issues with your nervous system. You have got lots of challenges. ये तस्वीर जिंदगी की नहीं होनी चाहिए। ये ड्राइंग जिंदगी की नहीं होनी चाहिए। ये नक्शा जिंदगी का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपनी लोनलीनेस को खत्म करिए। म्यूजिक सुनिए, करोके सुनिए, साथ में सिंगिंग कीजिए, कुकिंग कीजिए, कोई नई स्किल एक्वायर कीजिए। एट द सेम टाइम चैट जीपीटी पर जाइए, किसी पर भी जाइए। Your mental health program is very, very important. Ladies and gentlemen, the stigma is because the stigma is a major barrier to seek help. और देखिए, 1 in 5 experience mental health problems. 1 in 10 abuse drugs. Drugs बहुत आगे आ रहे हैं। बच्चे बहुत drugs ले रहे हैं. That is very unfortunate. And 65% show early sign of depression. And it is very unfortunate when I'm sharing with you this particular program. मुझे दुख से कहना पड़ता है कि every hour, at least one young boy or girl, one student commits suicide for one or the other reason. Ladies and gentlemen, mental health is very important along with the physical health. प्रॉमिस कीजिए कि आप पॉजिटिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, वाइब्रेंट रहेंगे और कुछ ना कुछ चीज में एंगेज रहेंगे, अनऑक्युपाइड नहीं रहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इन जूम सेशन के माध्यम से, इन प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको ऑक्युपाई करें हेल्दी वे में, आपकी स्किल्स को, आपकी कॉम्पिटेंसीज को, आपकी कैपेबिलिटीज को, आपके टैलेंट को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, आपकी पर्सनालिटी को, हर चीज को हम एम्पावर करें, एनहेंस करें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। We are doing more and more research on this. We are having lots of collaboration programs coming up on that. And we should work with schools, colleges, universities, ITIs, skill centers, training centers, polytechnics, everybody, wherever it is, and we should beat the stigma. That is something very important. And we should bring as much awareness we can bring. स्कूल्स के अंदर सिलेबाई कंप्लीट करने का मत सोचिए, कंटेंट देने का मत सोचिए, बच्चों के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। कोई बच्चा चुप क्यों है? कोई बच्चा बातचीत क्यों नहीं करता? कोई बच्चा सैड क्यों रहता है? कोई बच्चा डिप्रेस क्यों रहता है? किसी बच्चे को एंजाइटी क्यों है? किसी बच्चे को स्ट्रेस क्यों है? If all of us together put in our efforts, I'm pretty sure we can do a lot. So ladies and gentlemen, whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. We all can do a lot together. Every day we come on ICSI India web portal, that is the YouTube channel, which is your channel. And tourism is also one very important area. Tourism में बहुत तरह के प्रोफेशंस आ रहे हैं। टूरिज्म में बहुत सारी ओपनिंग्स आ रही हैं। टूरिज्म के एप्स के बारे में बात कीजिए, टूर पैकेजेस के बातचीत कीजिए, कहीं ट्रैवल कीजिए, लोगों के साथ मिलिए और सुनिए हर एक के दिल की धड़कन को। Our chamber, before the pandemic, we were having finishing school, which was brick and mortar finishing school right on the ground. And post pandemic, it's a digital inspirational lab. The role is same. We are working for same thing. No anxiety, no stress, no depression, no drugs, no suicide, and work on your personality, work on your communication skill. And we very strongly work with the music therapy for the good health and with fun, with entertainment, with happiness. Today, there is a need for the youth empowerment, teacher empowerment, women empowerment, corporate empowerment, because everybody has to remain happy. Everybody has to remain energetic. And we always say to everybody, schools mein, colleges mein, university mein, if you have got a physics lab, chemistry lab, bio lab, computer lab, language lab, microbiome lab, psychology lab, the time has come.
start working with the technology. You should have digital inspirational lab also. Last night, if you recall, we have done that Canada's caregivers program. Aapko yaad hoga? Yesterday evening, we have done it. So Canada work experience requirement for the caregivers. We also gave you the statistics, how basically the population is aging as far as the Canadian population is concerned, and what is going to be the role of the caregivers in future post pandemic. In 2023, the government of Canada immigration department is working very hard. They are going to get approximately 4,65,000 immigrants migrating to Canada. That is the estimate. This is the cross section also. We are giving it to you. You got to understand. Every day we will start bringing one country to you so that you understand. And when we talk about digital inspirational lab, we just wish to share with you what exactly is the concept, what ICSI is doing, what we all are doing. Let's have a look at it. Welcome to the Inspirational Lab of ICSI Finishing School for Service Industry. The International Chamber for Service Industry, or ICSI, brought on ground India's first finishing school for the service industry in 1994. However, it has become an inspirational lab and turned completely digital post-pandemic. Here, the students link academics beyond syllabi. They journey from effective communication to connecting skills, curiosity to creativity, along with soft skills, life skills and technical skills. Health and wellness is another important component of the Inspirational Lab at ICSI. Inspirational Lab is an initiative of ICSI to develop a holistic approach in education transformation. Visit icsiindia.in. Welcome to. So you enjoyed this particular short, crisp. Welcome. Now I just wish to share with all of you that let's have 5 takeaways from today's program. Why mental wellness of the youth is so important. Ladies and gentlemen, every youth, every human being on this planet is very important for this universe. ये जो जिंदगी है ये खुदा ने दी है, ये परमात्मा ने दी है, ईश्वर ने दी है, अल्लाह ने दी है, जीसस ने दी है, वाहिगुरु ने दी है. जिसने भी भगवान ने आपको ये जिंदगी दी है, आपको इसके साथ छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है. जब वो चाहेंगे आपको बुलाएंगे. Please do not have any stress, any anxiety, any kind of a depression, no suicidal tendency. You got to remain positive. हम सबक करते हैं. पॉजिटिव रहने का तरीका क्या है, मेंटल वेलनेस करने का तरीका क्या है. इसके 5, आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं. 5 चीजों को एक एक करके हम चलते हैं. सबसे पहले कनेक्टिंग, रिमेन कनेक्टेड. दैट मीन्स कभी भी आइसोलेशन में मत रहिए, कनेक्टेड रहिए, बातचीत कीजिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, कोच के साथ, मेंटर के साथ, काउंसलर के साथ, किसी भी जगह. बट देन बी एंगेज्ड. And that means connecting in neighborhood, connecting in community, connecting in state. जो भी चीज है, लेकिन unoccupied नहीं रहना है. Number 2, be active every day. सुबह उठने से रात के सोने तक remain active. नींद आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए कि नेचुरल प्रोसेस में आपको लगे, oh my God, such a beautiful sleep. लेटते ही 1 मिनट के अंदर आपको नींद आ जानी चाहिए. बट दैट इज पॉसिबल व्हेन यू हैव मेड योरसेल्फ हैप्पीली टायर्ड. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा दिन काम कीजिए, ये नहीं कि दोपहर को सो जाएं और फिर रात को 1 बजे तक नींद नहीं आ रही है. दैट इज नॉट करेक्ट. ओके. नंबर 3, टेक नोटिस ऑफ एवरीथिंग. जो भी आपके आसपास है, आपके आसपास तितली है, आपके आसपास कोई पेड़ है, आपके पास कोई पौधे हैं, कोई फूल है, कोई आपके पास नेचर है, कोई आपके आसपास छोटे छोटे पक्षी हैं, कोई भी चीजें, कुछ बिल बोर्ड्स हैं, रोड से गुजर रहे हैं, कहीं भी है. बी अटेंटिव. नोटिस एवरीथिंग व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन अराउंड यू. जिस प्रकृति के आप हिस्सा हैं, उस प्रकृति में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. बी ए पार्ट ऑफ दैट. नंबर 4, चौथा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप लर्निंग.
Keep learning every day. Learn something new. Learn something innovative. और हमेशा जिज्ञासा रखिए. हमेशा सोचिए कि मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ नया करना है. और खासकर अब आपको समझ आना चाहिए आने वाले टाइम में इट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूं. एंड फाइनली गिव. Give as much as you can give. Give your kindness, give your love, give your smile, give your happiness, give your joyful feelings, give your positive story. Give. That is something very important. Do something for friends, do something for parents, help your mother, help your father, help your brother, help your sister, help your teacher, help your principal. पॉजिटिव गिव. जब आप गिव की नेचर रखेंगे तो प्रकृति आपकी मदद करेगी. यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम नेचर. दैट विल डू अ लॉट फॉर यू. तो आज चलते चलते जाते जाते आपको पता है मैंने आपको म्यूजिक की भी बात करी. और म्यूजिक का इंटरेस्ट लीजिए. अगर आप म्यूजिक का इंटरेस्ट रखते हैं दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी जस्ट सी. ये तो एंड ऑफ द स्लाइड था. मैंने म्यूजिक कहाँ रखा है आपके लिए. मैं म्यूजिक पे चलता हूं. ओके. म्यूजिक पे आते हैं. म्यूजिक कहाँ है. हमारा म्यूजिक कहाँ है. हाँ म्यूजिक जी कहाँ है आप. हमने म्यूजिक तो लिया अपने साथ. कहाँ लिया म्यूजिक को अपने साथ. हमने लिया तो था. हमने कहाँ लिया था. मैं तो बहुत अच्छे से सोच रहा था कि म्यूजिक को तो साथ लेके चलना है. मैंने अपनी पसंद का एक गाना भी सोचा था. तो चलिए एक जाते जाते हो सकता है मुझे वो गाना कहीं मिल जाए. पर अगर उसका करोके मिल गया. करोके. मिल गया. इस करोके को सुनाते चलते हैं आपको चलते चलते. और इस करोके को हम लाएं कहां से. हम कोशिश करें कि हम यहां से लाएं. पावर पॉइंट स्लाइड शो. ये आ गया. ये दोनों आ गए. और ये हमारा ये आ गया. और अगर ये आ गया तो इसको बड़ा कर ले. Congratulations, you got 2% hike. Would you be happy? बस 1 मिनट से ज्यादा हम नहीं चला सकते बिकॉज इट इज नॉट परमिसिबल. हम 1 ही मिनट आपको सुना सकते हैं. बाकी गाना अपने आप सुनिएगा. इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग. यू विल एंजॉय. Now let me just share who all joined today because I must convey my deep gratitude and thanks to them. Sakshi Chauhan is the first to join from Uttarakhand. Julie Subamam joined from the Northeast. Nancy Sangma, Anand Mukherjee, Mr. Gohin, and then Claudia Lingua for Meghalaya, Hazarika from Assam, Prachi Kalita, Rishi Mohan, Anjan Kumar Bora, Laishram Dhamini, Kim Kipgin, and then Rosie Chakma, then Nancy Sangma, and then Julie Ma'am is writing, moreover, youth with mental health conditions face considerable stigma, which serves as a major barrier to help seeking. Yes, totally agreeable.
Then we have got ESVOSA. ESVOSA, I suggest that education effort for teens that specially focus on mental health and well-being rather than mental illness can help. Yes, I totally agree. Sakshi, reading to the mind what exercise is to the body. Wow, that's great. Ishita Shukla, anxiety and depression constitute more than 40% of the mental health disorders among young people. Those are between age of 10 to 19. Ishita, thank you very much. Vemuzo Vero, what are the best mental health resources for high school students? I shared with you 5 points. If you remember, connect, be active every day, take notice of everything around you, keep learning every day something new, and give more to the world. You will be more happy. Sakshi, your body will be around a lot longer than that expensive handbag. Invest in yourself. Wow, that's great. And Julie ma'am is writing, happily tired, best as wise, yet so moving and worthy practicing. Thank you. And a healthy outside starts from inside. Thank you. Last is Pooja joining us. Thank you very much. Thanks a lot to everybody. Those who have joined us today. It's a great pleasure. Look forward meeting you. We'll bring some other subject concerning our education, our youth, our teachers, our skills, our competency, our education ecosystem tomorrow in the evening at 8 p.m. तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुन